Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. I am Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily Newspaper Analysis and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे and newspaper analysis is very important as you know that gives you the idea like what kind of questions that can be framed in a newspaper. And why newspaper is important? Because it's the best source of knowing the current affairs fact. And why I am telling you this, because in daily newspaper analysis we covered most of the prominent things, like we cover like national news, we cover international based news, we cover economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And why it is important? Because I am telling you, because as you can see in the previous year law entrance exam, there are many questions that were based on international news, that were based on economy based news. So if you are reading newspaper, you make sure that you have to make a plan like what kind of news is possible to ask in your exam, because we don't have much time to read the entire newspaper. We got covered more than 34-35 pages. So our main idea behind to conduct the newspaper analysis is quite simple. Like we will give you the information that is short, compile and lucid, which is important for your exam perspective. So no need to waste your entire time to read the newspaper and more than 2 and 3 hours, right? So here the next one, quote of the day. And if your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. And to inculcate this thought process, what exactly you need to know about the newspaper that is shaping your mind somewhere. And just one small positive thought in the morning that can change your whole day. And here we have taken initiative. Questions of the day. Questions of the day is important because this is tells you about like once you read the newspaper, what kind of question that can be framed in your examination. Because until unless you have gathered all the information, but you don't know about like what kind of question can be framed, so there is no need to read all these things. So अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर लिए हैं, सो मेक श्योर दैट कि आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So here it is the very first article talking about uniform civil code. So recent political discussion that have brought the issue to the fore again, like uniform civil code, and in short that is we can say UCC. So what is uniform civil code and is it a part of the constitution? So पहले इसका मेन समझते हैं कि इसका एम क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का. So Uniform Civil Code aims to enforce a uniform legal framework to all citizens. Make sure not residents. All citizens irrespective of their religion. Right? So right now matters including marriage, divorce, succession, that is governed by religion based personal laws. जैसे for example divorce की जो हमारे इंडिया में laws हैं, तो that is Hindu Marriage Act, Muslim Marriage Act, Christians Marriage Act. So different caste having different marriage rules. Like for our Hindu Marriage Act, we have legally one marriage is allowed, but in Muslim we have 4 legal marriages allowed. Or as per the Hindu Marriage Act, the age to get married to someone is from 18 to 21. So a male, a female, it means a bride, a groom must be at age of 21. But in Muslim Marriage Act, it should be the age as per the Shariat के according. Any Muslim woman can get married at the age once she will reach the age of puberty. Puberty की age ऐसी कोई गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं करी है. इट मीन्स बट अगर आप कोई मुस्लिम गर्ल अगर 14-15 ईयर्स की है तो लीगली मैरिज कर सकती है. पर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है. इसमें आपकी एज एटलीस्ट 21 ईयर्स की होनी चाहिए. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि गवर्नमेंट वांट्स कि irrespective of their religion, the things should be for the in a uniform basis. So is UCC the part of constitution? Yes. Uniform civil code जो है ये part 4 of the constitution में है, and which includes the directive
principle of state policy, which is, we can say in short, DPSP. Is there any article which confer and which talks about the Uniform Civil Code? Yes, we have Article 44. So Article 44 जो हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, तो ये क्या बताता है? It states that the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. It means that the state have sovereign right to do this. So state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. And implementation of uniform civil code is one of the BJP poll promise. So is there any historical background to its enforcement, and why has it been patchy across religion and caste? Because UCC को that can be tracked back to the debates during the framing of the Indian Constitution. कुछ जो members थे Constituent Assembly के, that is including Dr. B.R. Ambedkar साहब, उनका ऐसा मानना था कि like UCC was necessary to promote gender equality, secularism and national integration. So it is important for three things as per the Constitution, not Constitution of India, as B.R. Ambedkar was firm believer in Constitution, and he was, we can say, father of Indian Constitution. And then he said कि लो UCC Uniform Civil Code is important for to promote gender equality, secularism and national integration So however, many others members including Naziruddin Ahmed that were against it and claiming that religious law of different communities should not be tampered with without their consent, right? So the implementation of the code has been patchy because India एक diverse country है. We have various religious communities following their own personal laws. For instance, the law of successions for most religion are skewed towards the male children of an interest person, and the legal marriage age of Muslim women is different from the others, while some religions are customary personal laws that is permits polygamy and polyandry, others do not. So these things we need to keep in mind, why the legal marriageable age for Muslim women is different from the others, while some religious and customary personal law that permits polygamy, polyandry, and others do not. So is there any state and UTs that have adopted the Uniform Civil Code? So most of the BJP ruling states like Gujarat, Madhya Pradesh, Assam that have expressed their willingness to follow the UCC, and none have officially adopted it. But a version of UCC is placed in Goa. It follows the Portuguese Civil Code of 1868. Because as we know, at the time of independence, Goa was not a part of India, right? So कौन से operations हुए थे जहाँ पे Goa 1961 में Goa became the part of our country, right? On that time जब country में को independence मिली थी उस time Goa हमारे country का part नहीं था. So it follows the Portuguese Civil Code of 1867. ये क्या mention करता है? Which means that people of all religion in Goa are subject to the same laws on marriage, divorce and succession. Succession मतलब जो आपके land है उसका heir कौन होगा, वारिस कौन होगा उसका. तो गोवा में इस चीज़ को मेंशन किया गया. गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 which was passed after Goa joined the Union as a territory in 1961. Goa gave permission applied to okay, 1961 में Goa became the part of India, right? So Goa joined the Union as a territory in 1961. At the time of once the Goa became the part of our country, Goa was a Union territory, and Goa gave permission applied to the Civil Code. So how did the recent furore over the Uniform Civil Code start? इसकी जब स्टार्ट हुई तो डिमांड किया इम्प्लीमेंटेशन का UCC हैज़ कम अप मेनी टाइम्स. सबसे पहले आपको देखा होगा 1985 में ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि शाह बानो इज़ अ मुस्लिम वुमन हु वाज डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड टू बी गिवन अ फाइनेंशियल सपोर्ट. सो इज देयर व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द अगेंस्ट द UCC? So many believe that UCC is an important for the national integrity and gender and religious equality. But
people opposing it say that UCC could infringe upon religious freedom and might clash between religious practices because the laws in our countries are different, because there is no Sikh Marriage Act. Sikh comes under the Hindu Marriage Act 1954, right? There again I have one article about he's our former Venkaiah Naidu, हमारे इंडिया के former vice president थे. इन्होंने बताया कि इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो इनके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी इस आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं जो दैट वी शुड नो ऑन दैट. सो इंडिया बीइंग अ डाइवर्स नेशन इज़ अ होम ऑफ मेनी रिलीजन्स, each of with distinct personal laws governing marriage, divorce, adoption, inheritance and succession. It would accurate to say that absence of uniform civil code has only served to perpetuate inequalities and inconsistency in our land of rich diversity. In fact, अगर हम जानने की कोशिश करें कि this has been a hindrance in the nation's progress towards social harmony, economic and gender justice. और मैंने आपको बता दें कि बी आर अम्बेडकर क्या इसके लिए सोचते थे, जो कि सेम इस आर्टिकल मेंशन की हुई है. सो UCC would eliminate discriminatory practice that deprive women in their rights and provide them with equal opportunities and protection. So our diverse society calls for a unified legal framework to foster social cohesion and national integration. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे दैट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टिंग challenges and stress the need for a UCC to bridge the gaps and promote a sense of unity among diverse communities. So ये हमारा एक मेन आर्टिकल था. Moving to the next one, standing of national anthem, what is the Supreme Court has ruled? See, recently the executive magistrate थे श्रीनगर में, उन्होंने सेंड किया 11 men to jail after they were detained for allegedly not raising the national anthem at the event on June 25th, where Jammu and Kashmir के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा was present. So मनोज सिन्हा जो वहाँ पे प्रेजेंट थे यहाँ पे, उसके लिए बात हो रही है. सेक्शन क्या कहता है हमारा, सेक्शन 107 ऑफ सी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू आस्क एनी पर्सन हु इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ अ पीस टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और नॉट and do any wrongful act that may probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility. So अगर इस केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे आपका बिजोई इम्यूनल केस आता है. The law around alleged disrespect the national anthem was laid down in the Supreme Court in 1986 versus Emmanuel Ores and State of Kerala case. कोर्ट ने ग्रांट किया था इस चीज़ को कि प्रोटेक्शन ऑफ 3 children belonging the So यहाँ पे कोर्ट ने हिल किया फोर्सिंग देम टू सिंग द नेशनल एंथम वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को अलाउ करता है कि किसका एक फंडामेंटल राइट है टू इफ द समबडी राइट्स बी वायलेटेड. अगस्त 11 1986 को जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इसने बताया कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन was incorporated in recognition of the principle that is the real test of true democracy is the ability of even an insignificant minority to find its identity under the country's constitution. DUJAT को रिविजिट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट किया कि मैटर ऑफ श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में, और कोर्ट ने बताया यहाँ पे कि ऑल द सिनेमा हॉल्स इन इंडिया shall play the national anthem before the feature film starts and all present in the hall are obliged to stand up, show respect to the national anthem. और ये ऑर्डर पास किया गया on 30th November 2016 is modified to the extent that playing of national anthem prior to the screen of feature film in cinema hall is not mandatory
बट ऑप्शनल और वी कैन से डायरेक्टरी। अभी देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में क्या है हमारे कंट्री में, विच इज द बेसिक पॉइंट। 26 जनवरी 1911 जनगण मन जो नेशनल एंथम है फर्स्ट संग एट इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलकाटा सेशन। जनगण मन which would become India's national anthem was sung for the first time at the Indian National Congress annual convention at Calcutta on December 27, 1900. It was written by Nobel laureate Sobhis Rabindranath Tagore in Bengali, although the vocabulary used was majorly inflected by Sanskrit. और इस सॉन्ग को फर्स्ट पब्लिश किया गया अंडर द टाइटल भारत विधाता इन तत्वबोधिनी पत्रिका इन जनवरी 1912 को। इसी ईयर में एक सेम इंसिडेंट था कि हमारा द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950 को। अभी कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, ये आप जानने की कोशिश करो कि यहाँ पे द सॉन्ग जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया विच वॉज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर 1911 originally in Bengali. The Janagana Mana was declared national anthem on 24th Jan 1950. It takes about 52 seconds towards total completion, which it takes 20 seconds for the first and last line of the stanza. The first version of Janagana Mana was sung in the convention of Indian National Congress, Calcutta. This song, the Janagana Mana, was first published under the Bharat Vidhata in Tattvabodhini Patrika in January 1912 में। जो लाइन लिखी है नेशनल एंथम की ऑफ इंडिया उसको ओरिजिनली सेटअप किया है रागा अहिल्या बलीवाल ने, और ये अभी भी इट इज संग विद अ स्लाइट वेरिएशन टू द क्लासिकल फॉर्म ऑफ रागा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग अबाउट इज ब्रेन ईटिंग अमीबा दैट हैज किल्ड टीनेजर इन केरला। सो अ 15-year-old in Kerala Alizupa district has died due to the rare infection caused नाइगेरिया फॉलरी और ब्रेन ईटिंग अमीबा। और ये इसका नाम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। एंड व्हाट इज ब्रेन ईटिंग अमीबा? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। दिट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस अमीबा इज आपकी क्या होती है? सिंगल सेल की होती है। इट इज़ यूनिसेलुलर, वी कैन से दिट इज यूनिसेलुलर एंड बाइसेलुलर। So because as we know the cell is a structural and functional unit of a life, so it is a single cell organism that can be seen only a microscope and is found in warm freshwater environment such as जैसे आपके lakes हो गए, river हो गए, springs, and it survives only on bacteria in the sediments in lakes and rivers. अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स में, तो अमीबा एंटर्स करता है बॉडी थ्रू द नोज एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन एंड ड्राइविंग और जंपिंग इनटू रिवर और लेक दैट कैन फोर्स वाटर अप टू द नोज एंड इन्फेक्शंस लीड्स टू अ 7 एंड यूजुअली फैटल ब्रेन इन्फेक्शंस नोन एज प्राइमरी एमोबिक मेलियोजेनोप्लेटिस PAM। ठीक है, सो ये एक आपको इसमें फॉर द इम्पोर्टेंट टेकअवेज फॉर द एग्जाम इज दैट व्हाट इज द not a zoological name need to remember and botanical name not need to remember because this is not possible. We are not going to appear in a NEET exam, so आपसे नहीं पूछेंगे, but make sure that they will ask you about the Navigaria flavulary is a single cell organism that can be seen, but आपको ये मैं याद रखना है, this is made of single organism, right? And the state affected is Kerala. And make sure that this is not a communicable disease. So this infection does not spread from person to person. Preventive measures like avoiding warm freshwater bodies, that is inadequate chlorination, using nose clips or nasal cleansing rituals that can help reduce the risk of contracting Navigaria flavulary infection. So the amoeba causes inflammation and destruction of brain tissue, right? इसके क्या symptom and all, इसके बारे में हमें नहीं जानना है। Now moving to the next one, Iran induction in the Shanghai Cooperation Organization. So why will the entry of SCO newest member that aggravates image of being anti-West? So पहली चीज़ तो SCO क्या है? What is SCO? And what is the goal of SCO? And what is the SCO summits? विच इज़ रिसेंटली आपके जुलाई 4 में
यहाँ पे आपकी इंडिया में हो रही है SCO समिट्स। सो इसमें इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, हाउ द मेंबर कंट्री इज अपॉइंटेड एंड हैंडलिंग द इशू ऑफ एशिया। सो SCO को जो बिल्ड किया गया उसमें 5 ग्रुपिंग थे, लाइक रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। सो इन शॉर्ट वी कैन सी द कंट्री आज ऑफ SCO आर रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। और ये पोस्ट सोवियत एरा की टाइम है 1996 की। पोस्ट सोवियत विच मीन्स द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन 1991 इज USSR, राइट। सो USSR इज एन आउटकम ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, राइट। सो USSR जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके बाद आपका ये आपका SCO बनता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में शंघाई के 5 मेंबर्स को इंडक्ट किया गया, उज्बेकिस्तान इनटू द ग्रुप एंड नेम्ड इट द SCO। इसके 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं SCO के, जो कि हमारा उसके सेक्रेटरीट हैं बीजिंग एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर हुआ ताशकेंत। ताशकेंत का है आपका सर अफगानिस्तान। तो क्या मेन गोल है SCO का? SCO बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबर लाइंस अमंग द मेंबर स्टेट्स, जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उसके बारे में। लीडर पार्ट अगर बात देखें यहाँ पे new international political and economic order did not sit well with the US and Europe, and the concern क्या है इसमें कि यहाँ पे heavy sanctions किए गए that were placed on Russia for its action in Crimea, and China came to aid signing of $500 billion gas pipeline agreement, right। और जो यहाँ पे जो क्या है SCO जो डील करता है बायलैटरल इश्यूज़ को, इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था SCO एज एन ऑब्जर्वर इन 2005। ये डेट आपको याद रखनी है। 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन द SCO एज ऑब्जर्वर इन 2005 एंड वर एडमिटेड एज अ फुल मेंबर 2017। सो इंडिया 2017 में आपका मेंबर बनता है SCO का फुल मेंबर, जबकि सिंस 2014 इंडिया एंड पाकिस्तान हैव कट ऑल टाइज, टॉक्स एंड ट्रेड विद ईच अदर। हाउएवर बोथ कंट्रीज हैव कंसिस्टेंटली अटेंड ऑल मीटिंग ऑफ द SCO 3 councils। So not only Pakistan, the SCO has also facilitated talks between India and China on the line of actual control। तो क्या है ईरान का इंडक्शन सिग्निफिकेंट? इन ईरान बिकॉज इंडिया दैट हैज़ बिल्ड इट्स कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट। जो चाबहार पोर्ट है आपका ईरान में है, विच ऑपरेट्स द टर्मिनल एंड थ्रू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट गोज थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू रशिया, एंड इट इज़ द एंट्रेंस ऑफ ईरान। और SCO जो है एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। जुलाई 4, 2023 द प्राइम मिनिस्टर इंडियन नरेंद्र मोदी चेयर द 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जब भी हमारा जुलाई 24 चल रहा है, 23rd है आपका। इंपॉर्टेंट टेकअवेज आपको याद रखनी है। हेड ऑफ द स्टेट SCO CHS समिट विच वर हेल्ड एज अ वर्चुअल फॉर्मेट। दिस इज द फर्स्ट टाइम SCO CHS काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट वॉज हेल्ड अंडर इंडिया चेयरमैनशिप। इससे पहले इंडिया ने होस्ट किया था 19 SCO CHS 2020 में, एंड द मीट वॉज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। इस बार थीम क्या है इसका SCO का? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरनमेंट, राइट। की टॉपिक्स जो मेन डिस्कस की इसमें कि लाइक सिचुएशन इन अफगानिस्तान, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। तो आपको इसमें थीम को याद रखनी है कि इसमें थीम क्या है, बनाओ इसका थीम क्या है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर इसमें देखें कि यहाँ पे PM मोदी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया का AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी। अब ये भाषिनी जो है यहाँ पे, भाषिनी का मतलब हो गया भाषा, राइट। सो PM मोदी ने रिप्रेजेंट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP लैंग्वेज बेस्ड भाषिनी, भाषा से बनाया गया भाषिनी SCO समिट्स में। और यहाँ पे विच कैन ट्रांसेंड लैंग्वेज बैरियर्स बाय ट्रांसलेटिंग इन रियल टाइम एंड अलाउइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस टू इंटरेक्ट विद वन अनदर ओवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। एट प्रेजेंट जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है SCO का, दैट इज मैंडरीन विच इज द वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, एंड रशियन, and India is proposing the include English as the official language of the group.
अगर भाषिनी की बात करें 2022 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया भाषिनी अंडर नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन NLTM, जिसको डेवलप किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, and its aim to bring the non-English speaking population of the nation to the globe internet and help them access it in the language itself. Or it is one of the key missions by the Prime Minister Science Technology Innovation Advisory Council. भाषिनी एक तरह से डेटा रिपोजिटरी है एंड अ मॉडल रिपोजिटरी है इन शॉर्ट अगर देखें तो. And here we reach the last article of the day is चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विच लॉन्च व्हीकल, और इनको भी लॉन्च करने वाले हैं जुलाई 12 से. लॉन्च विंडोज है जुलाई 12 to 19 with the orbital racing will take place soon after launch. और ये लॉन्च कौन करने वाले हैं? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो इसमें आप ये देखना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विच इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द चंद्रयान 3 मून मिशन इन जुलाई एट इज इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल मार्क 3rd LMV ऑन वेंसडे. तभी तक जब तक इसकी कुछ आउटकम नहीं आते, यहाँ पे आप देख सकते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है इसको, विच इमेज वी कैन सी इट. नाउ it's time to questions of the day and why it is important, because it gives you an idea कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे and how you need to keep an eye on that, right? चलो, the chairman of GST Council in India is Revenue Secretary, Finance Secretary, Home Minister and Finance Minister. So it's obvious Chairman of GST Council in India is Finance Minister. So GST Council, it is an apex committee to modify, reconcile or make recommendation to the union and state on GST, like the goods and services that may be subjected or exempted from GST, model GST laws. Or Article 279A of the Indian Constitution empowers the President of India to constitute a joint forum of the center and a state called the GST Council. The GST Council is chaired by the Union Finance Minister, and other members are the Union State Minister of Revenue or Finance and member in charge of finance or taxation of all the states. So that article is need to remember because this is very important and will asked in your exam. Next we talk about is which of the following statement about data scraping is true. So data scraping is a technique used to retrieve information from a website or web page. Data scraping is an illegal activity and prohibited by law, and data scraping can only be performed manually by copying and pasting data from websites. It is a term used to describe the process of analyzing data to extract meaningful insight. So you have to find it out which one is statement is about true. Obviously the first statement is true. Because data scraping that refers to automated process of extracting large amount of data from website or digital platforms. It involves using software or script to gather information from web pages, platform like Twitter, and then using the data for creating new content for journalism and research purpose. तो रिसेंटली अभी ट्विटर ने इम्प्लीमेंट किया था इस चीज़ को, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. Recently, the headlines focused on a place like Morie,
Naypyidaw, Bago and Mysore, which were connected to G20 Summits 2023, Russia-Ukraine War, Manipur Violence 2023, and India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway. So the right answer is India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway. As we can see, many times in the news, like Union Ministry of Road and Transport, approximately 70% of construction work of India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway has been completed, and it is 1360 km long route. ये जो highway है under construction है under India's Look East policy that will connect Moree, India with Mysore, Thailand via Myanmar, and there is a proposal to extend it from Cambodia, Laos and Vietnam. Consider the following statements regarding postal ballots. Member of armed force and government employees posted outside India are entitled to vote only by post. Voters under preventative detention cannot vote by post. President of India, Vice President, Governors and Union Cabinet Ministers have the option to vote by post. You have to find which one of the statement are correct one. So obviously the answer is only B. So यहाँ पे postal ballots क्या होते हैं? एक restricted set of voters होते हैं that can exercise postal voting, and यहाँ पे a voter can cast her vote remotely by recording her preference on an official ballot paper and sending it back to the election office before counting. Members होते हैं armed force like army, navy, air force, member of the armed police force or state government employees posted outside India and their spouse are entitled to vote. In other words, they can't vote in persons. Voter must preventive detention can also only by post. स्पेशल वोटर्स जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस, इनको पास ऑप्शंस होती हैं वोट को बाय पोस्ट करने की, बट दे डू नॉट हैव अप्लाई थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और अवेल द फैसिलिटी. द लास्ट वन, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स is released by World Bank, World Economic Forum, World Trade Organization and International Institute of Management Development. Recently the index was published. So the answer is option D1. So India has been ranked 48th on the latest World Competitiveness ranking released by International Institute for Management Development. Although India has slipped 3 spots, 43rd rank आई थी 2019-2021 में, right? So अभी इसकी improving है because we got 40th rank. Now this is all about the session, dear student, and I hope you enjoyed the YouTube session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section, and please share to your friends so that they will get advantage of this. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned and we'll meet you tomorrow at the same time. Bye bye and take care.